So welcome in this video. In this video, we will app for cart system, add to cart system. We will use React Redux and Redux Toolkit for the global state management. So we will start by using create a React app. So I'm using terminal. I will run a command which is npm create at the latest. By using this command, we can create a React app. So here he is asking for a project name. I will simply type cart app using Redux toolkit. Enter. It will ask for framework. I will use React. Then it will ask for a language. I will select JavaScript. Now we will jump to our app. So here is the app, cart app using Redux toolkit. Now we have to install node module, so simply run npm install, or we can simply write it npm I. So after entering this command, we have to wait some time for installing node modules. So it is running. So it is installed. Now simply we will open our editor. So for opening my code editor, I simply type abhay dot. It's a command to open code editor. So you can see our code editor is opened. So in this project, I will use some API, sorry AI tools to do it in fast mode, because if I do it in simple way, it will take long time. So you can see there is some files we don't need, to simply delete them, like app.css and index.css, and delete them. So I have deleted two both files. Now I have to make some changes in main file. So simply do this file or line of code in app. Simply delete all the code and write a press app const app or like that arrow function. Now type return. Oh, I have to turn off. So now it is but good. तो मेरे पेन का जो ऐप बना दिया है, उसमें हम रिटर्न करा देते हैं अभी के लिए एक फ्रैगमेंट टैग, जिसके अंदर अभी केवल हेलो लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि चेक कर ले कि हमारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या नहीं। तो यहाँ कमांड चलाएंगे, इसको चलाने के लिए npm run dev. After running this command, we can see the result. So simply type o and enter. It will open our app in a browser window. So you see is hello world. Now we will install some dependencies for our React app, like npm react router DOM for making routes, and axio for fetching data,
and one more thing, or I will install Bootstrap and React. Bootstrap. I have to install one more thing, which is Redux Toolkit. It and React.js Toolkit page. Simply go there and find npm command to install it. So you can see the command at the rate Redux.js slash toolkit. You don't have to remember this command because it is on internet. Simply remove npm I from the line and hit enter to install all the dependencies. I will install some more like ANTD and React icon. Good looking. So hit and hit enter. Oh, I have made a mistake. I have to write npm I instead of npm React. So it will take some time to install these dependencies. I'll go to React Bootstrap page to find CSS link. Started. Scroll down below and you can see the CSS link. We have to copy it and paste into main.js file. So here we will paste it. After that, our React Bootstrap is linked to our app. Now wait to complete the command. In the meanwhile, we will make some basic codes like we will need a layout JSX. This file will show all the components and we will need, first of all, we will make two folders, one for components and other one for pages. So in components, we will write only components that are default. We don't need to change in other pages. So here we will write header page, header.jsx, and one more thing, footer.jsx. First we will create header. I think our internet is slow. Why it is taking that time? Let's make a header. Simply go to our React Bootstrap, go to navbars and simply select that navbar you want to add in your project. So I will select first navbar. Here it is. So I will simply click on copy and it will copy the code of header. I will paste it here and change the name of function to header. By changing the, I will remove drop down because I don't need drop down in our web page like that, and on drop down from here also. Why it is taking that much time? Now I will use AI to make a footer because we don't find any footer in our React Bootstrap page, so I have to create a React footer using AI. So I will simply click Ctrl I and hit a query, make a footer using
React, Bootstrap, and React, and set it to bottom of page. See, AI tool has made. So now we will import both of components in our layout page. To come to layout page, we will simply make a layout page. Name it is LAE like that. So currently I have not made any outlet right now. I will make it in future. So export default outlet and simply comment out outlet and import header and footer. Import header from header and footer from footer. So and exported and imported app. So write import command on top of the fields. Import setting layout. Now come our website and check it is working or not. Simply run the page and back to browser window, and here we can see why it is taking that much time. So you can see the header and footer is linked to our back page. Now we will make a dummy database for showing products in our home page. So let's make a db.json file because I am using db.json server. So I will write db.json as a file name for data and hit enter. Now for data I will use my previous data because I don't want to waste my time in making database. So I will simply go to my one of project like task checkout some file. So I will simply click Control C to copy the page and come to our editor and paste it here. Control V. So that is not going paste command. Control. Yeah. So we have pasted the code. Oh, the file to paste has been deleted. We can view. Copied them. Unable to move copy. For copying the file, we have to click it first. So we click it. Now we will, and you can see our file is here. So here I have inserted many items. Now we have to run our JSON server to live the data. So command like JSON server dot dot JSON and the port number you want. If you don't want to change port number, you can simply click enter. It will run on 3000 port. But I want to change the port number, so I am writing /-b and 4000. Now hit enter. Enter. So you can see our data is live. If you want to double check it, simply click on Control Shift C, copy the file path and hit enter. When we run this, you will see data is live or not. So you can see our data is live now. Now we have to make route. So in app.js, simply we will create APIs or route. So first we will import the
routes and route. So for them, now we will use them in our route. So first we will write browser router, then we will write routes. In between routes we will write route. Path on slash, if path is slash, element will be shown as layout. Now we are using nested routing because I want to show all the pages within layout file, so I am using nested routing here. So I will type route and I will route other routes within both the tabs. So he is suggesting me, so I will simply click tab, right like that, and I will close the browser router component. So currently we have not made home, about and contact page, but we don't need about and contact page, so simply delete them. Instead of them, we will create a product page, path, or we can create a cart page. When user go to cart, we will show cart page. So currently we have not made cart page. Simply go to our pages folder and make two files, one for home.jsx and one for cart.jsx. So cart.js. Now we have to put files in here. So simply write import home from home and pay cart from carts. But currently we have not made any component here, so we have to create a component. So simply const home now tab. Now here also we will write const cart equal to default cart. And now in our header section we have to make link outlet here. So come to our header section and here we have to this. When we user click add और टू में घूम देंगे ऐसे ही कार्ड पे देखेंगे स्लेश की जगह हमें सिर्फ होम दिखाना है और कार्ड की जगह सिर्फ कार्ड दिखाना है और बाकी जगह हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। आउटलेट पे आएंगे, यहाँ आउटलेट आउटलेट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम अपने ऐप पर जाकर देखते हैं क्या हमारा ऐप सही से वर्क कर रहा है। हमारा ऐप सही से वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा स्लैश राउटर होम पेज दिख रहा है। जब हम कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमें कार्ड पेज दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमने कंपोनेंट वगैरह बना लिए हैं। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो हमारा डाटा है इसको हमें कार्ड के रूप में अपने होम पेज पे दिखाना है। तो हम होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले कुछ हुक्स और कंपोनेंट का यूज करें। तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा create और यूज इफेक्ट का
और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सियोस, क्योंकि हम जो हमारे डाटाबेस की एपीआई है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले एक स्ट्रिप बना लेते हैं जिसके अंदर हम जो एपीआई से पेस्ट करके लाएंगे डाटा उसको स्टोर करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेट बना रहे हैं उसकी यूज करके होते हैं हमारा जो डाटा है, डाटा जो कि और किस पर है, डाटा हमारा इस एपीआई पे है, तो इसको हम करेंगे कॉपी और इसको करके हम यहाँ पर इस डाटा को लेके आएगा और डॉट देन की हेल्प से हम इस डाटा को जो रेस्पॉन्स में आ रहा है इसके रेस्पॉन्स के डाटा को हम सेट प्रोडक्ट्स के हेल्प से इस डाटा में शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास डाटा हमारे पास प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर है। अब अब हम इस डाटा को एक मैप करा देते हैं, तो कॉन्स्ट आंसर डाटा है, इसको हम मैप कराएंगे कराने के लिए कि फॉरवर्ड फंक्शन लेता है जिसमें कोई भी पैरामीटर लेंगे, उस पैरामीटर के अंदर एक एक करके हमारे एरे का आइटम आता है। कर्ली ब्रेसेस की जगह यहाँ एरर। अब क्या करते हैं, हम एक कार्ड बनाना है जिसके अंदर ये डाटा आएगा, तो हम सिंपली आई का टू स्टोर card. So you can see it has written all the card components like the card, item.image, item.name, item description and go somewhere की जगह पर हम इसके करेगा बटन कैपिटल बी कार्ड। अभी के लिए सिर्फ ये डमी है, तो अभी वर्किंग में नहीं रहेगा। ऐड टू कार्ड। अब इस आंसर को हम यहाँ पर मैप करा देंगे। देखते हैं क्या आ रहा है। एक एरर आ रही है, एरर आ रही है क्योंकि हमने जो ये कार्ड का यूज़ किया है बटन। सो कंसोल एंड out match location slash home. So slash home there is no route, so we have to make a route like that. So copy it and paste it here and path slash home. When open we can see our card items here. So currently it is in a single column. We have it write some more styles here. So I'm using align filter here. Style equal to display flags and flag wrap.
for that. So by using this we can create div container like that. So currently the div is in pages, so we have to make some padding and margin here. So simply come to the div and write padding or margin here. So I'm writing margin 10 pixels, so it will make 10 pixel margin everywhere. So you can we have made card items. Have to fix the image size also. So simply write style here. I'll hide 200 pixels. It will fix the height. Now we will implement store here. So for store we have to make a store page. So now file तो स्टोर.jsx के अंदर हम रेडक्स का जो स्टोर रहता है उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कॉन्फ़िगर स्टोर को। कॉन्फ़िगर स्टोर क्या करता है, स्टोर के बनाने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे नाम यहाँ हम अपने स्टोर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, अगर अभी डिफ़ॉल्ट रूप से मैं स्टोर ही नाम दे रहा हूँ। और जो कॉन्फ़िगर स्टोर है इसको हम कॉन्फ़िगर स्टोर एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये एक मेथड है तो उसको हमें एक पेंसिल इसके अंदर लिखना पड़ेगा। और ये एक इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं ताकि इसके अंदर हम जितने भी हमारे स्लाइसेस हैं उसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम बहुत सारी स्लाइसेस लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है। अगर हमारे पास एक ही स्लाइस होगी तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्लाइसेस हैं। रिड्यूसर के अंदर इसको लिखते हैं। अब रिड्यूसर के अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि कार्ट नाम के हम जो बना रहे हैं इसलिए हम कार्ट लिख रहे हैं। और जो हमारा एक स्लाइस बनाएंगे उसकी वैल्यू को अभी यहाँ ले रहे हैं। हम क्या है इस नाम की फाइल बनाएंगे और सबसे पहले अपने जो स्टोर है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब यहाँ आके हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा कार्ट स्लाइस डॉट JS। इसके अंदर हम स्लाइस बनाएंगे, क्योंकि हमें स्लाइस बनानी है तो हमें एक फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है क्रिएट स्लाइस। ये हमें स्लाइस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि रेडक्स टूलकिट से हमें मिलता है। अब हमें कार्ट स्लाइस नाम का फंक्शन बनाएंगे, स्लाइस नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसमें ये ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसमें 3 चीज़ें पास करनी पड़ती है। एक तो नेम, इसके बाद स्टेट देनी पड़ती है। इनिशियल स्टेट के अंदर स्टेट राइट इज नॉट शोन हियर, तो इनिशियल स्टेट एंड थर्ड वन इज एक्शन। इनके इस रिड्यूसर के अंदर हम जो भी फंक्शन हमें चलाने पड़ते हैं उनको हम लिखते हैं। तो अब इनिशियल स्टेट, क्योंकि हम एक कार्ट वाला पेज बना रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं, तो कार्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स आएंगे जिसको हम किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहेंगे, तो हम यहाँ एरे का यूज़ कर रहे हैं। और जो नेम है, नेम की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर कार्ट। और इनिशियल स्टेट इसकी एरे है। यूजर के अंदर बहुत सारे फंक्शन रहेंगे, जैसे एक फंक्शन रहेगा ऐड टू कार्ट। ये फंक्शन एक कॉलर फंक्शन को लेता है जिसमें दो चीज़ रहती है, स्टेट और एक्शन। इसकी हेल्प से ये जो भी इसका एक्शन का पिलोड में डाटा आ रहा है उसको हम इस एरे के अंदर डालेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें एक एक्शन बनाते हैं और इस स्लाइस को हम डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइस और उसका जो रिड्यूसर है उसको। रिड्यूसर्स के अंदर क्या रहता है, जो ये वैल्यू है इनिशियल स्टेट की वो इसके अंदर रहती है। और एक्सपोर्ट कॉस्ट
जो हमारी फंक्शन है उसको हम नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं ऐड टू कार्ट यहाँ लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो कार्ट स्लाइस के जो एक्शन उस पर एक्सपोर्ट कर देंगे। स्टोर में आके हमने इसको पहले ही इंपोर्ट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, मेन फाइल के अंदर आएंगे और मेन फाइल के अंदर हम दो चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। एक तो हमारा स्टोर, क्योंकि स्टोर हमारा बाहर ही तो स्टोर आ जाएगा। और एक हमें चाहिए पड़ता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को अदर कंपोनेंट को प्रोवाइड कराने। तो प्रोवाइडर की हेल्प से हम जो स्टोर की वैल्यू है उसको हम अपने पूरे ऐप के अंदर दे देंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी दिक्कत ना हो इसलिए मैं स्ट्रिक्ट मोड को भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से बैठा देता हूँ। और जब ये प्रोवाइडर स्ट्रिक्ट मोड की जो लाइन है उसको भी हटा देता हूँ। अभी तक देख सकते हो हमारे पेज में कोई अभी एरर वैसी कुछ एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है देखते हैं जरा जाके। हाँ है, कार्ड स्लाइस की पहली लाइन में कुछ दिक्कत है। कार्ड स्लाइस पहली लाइन में कुछ दिक्कत है। राइट ना, क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट देता है इसलिए हमने पहले गलत लिखा था। अब हमारी एरर सही हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल में हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हमें स्टोर जेएस now all error has gone. These are all temporary errors, so we can fix it. So now हमें क्या करना है, जब भी हम कोई ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें तो जो उसके आइटम्स की वैल्यू है एक आइकन बनाएंगे, उस पर शो होगा। तो जो हमने कार्ट नाम का जो यहाँ हेडर में एक पेज बनाया है तो हम पेज का नाम ना देते हैं, इसको एक आइकन के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और की जगह मैं इससे बोलता हूँ ए आई सी की एक रिएक्ट आइकन है। आई विल सेलेक्ट ऑल द कोड एंड सिंपली राइट रीड कार्ट यूज कार्ट आइकन आइकन्स। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो हेडर है उसमें कार्ट की जगह एक आइकन लगा देगा। अब हमें इस आइकन को राइट साइड पे लिखना है, तो अभी यहाँ से ये रिएक्ट हटा देते हैं और टॉगल कोलैप्स स्नैप, इस स्नैप की जगह हम इसको स्टाइल लगाएंगे। इसमें स्टाइल अलग अलग कर देंगे। अब हम क्या चाहते हैं, अब इस पे आते हैं। तो अब हम चाहते हैं जब इस बटन क्लिक करें तो कार्ट आइटम तो खुल रहा है, और जब इस बटन पर क्लिक करें तो ये आइटम की जो भी वैल्यू है वो हमारे कार्ट में स्टोर हो जाए और कार्ट की वैल्यू हम यहाँ जब क्लिक करें तो यहाँ शो हो। सबसे पहले हम इस आइटम को यहाँ स्टोर करते हैं और क्या करते हैं, जब भी आइटम ऐड हो तो यहाँ उसका नंबर दिखाई देने लगे। तो पहले तो हम डाटा को ऐड करवाते हैं। तो ऐड कराने के लिए हमारा जो होम पेज है वहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे देखो हमें जब ये वाला फंक्शन चलाना है कार्ट स्लाइड का ऐड टू कार्ट, तो पहले हमें यूज़ डिस्पैच हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कार्ट में आएंगे, सॉरी होम पे आएंगे, यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे यूज़ डिस्पैच हुक का, और साथ में ऐड टू कार्ट जो फंक्शन है उसको भी हमने इम्पोर्ट कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब डिस्पैच का यूज़ करना है तो उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, कॉपी बनानी पड़ती है। तो अब हम चाहते हैं जब हम
इस बटन पे क्लिक करें तो जो आइटम है वो कार्ट में स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली ऑन क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक हो तो वाले फंक्शन चले डिस्पैच, जो कि कार्ट जो फंक्शन है पूरे आइटम क्या है, इन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पूरी वैल्यू लेके जाए। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कोड, सॉरी तो अभी कोई दिक्कत, तो सारी दिक्कत खत्म हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, जब भी हम इस बटन को क्लिक करते ऐड टू कार्ट आएगा और ऐड टू कार्ट फंक्शन में आइटम को लेके जाएगा। और जब ऐड टू कार्ट में ये आइटम वाला फंक्शन जाएगा तो हम जब स्लाइस में आएंगे तो ये जो आइटम है वो हमें एक्शन और के पेलोड वाले ऑब्जेक्ट में मिलेगा। और इस आइटम को हम जो हमारा एरे है उसके स्टेट डॉट कार्ट, सॉरी यहाँ इनिशियल स्टेट डायरेक्ट वैल्यू है, इसकी जगह हम लिखेंगे कार्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो कार्ट में कार्ट एक क्या है, एक एरे है, एरे में ये वैल्यू को पुश कर दो। और जब ये वैल्यू पुश होने लगे तो कंसोल भी पुश कराना है, स्टेट डॉट कार्ट की वैल्यू को हम लॉक करा देंगे। तो देखते हैं अगर वैल्यू सेट हो रही होगी तो हमें यहाँ पर कंसोल हो कुछ। तो हम इस पर टू कार्ड क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ कार्ड साइज की 11 भी कुछ दिक्कत आ रही है। तो क्या है इसको समझना पड़ेगा। डॉट लॉग एक्टिव कार्ड डॉट एक्टिव कार्ड और आई थिंक इट इज नॉट ओके। करते हैं उसके डॉट कार्ड की जगह यहाँ पर हम शायद मुझे लग रहा है यहाँ आइटम की वैल्यू ही नहीं आ पा रही है, डाटा स्टोर के लिए हो रहा है। डॉट पुश डॉट पेलोड, सॉरी 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 मेरे को लाइक दैट। तो by using this we can get access of all error. So start and it is showing कार्ड के अंदर आ रहा है। तो हम अपने हेडर में आएंगे और हेडर के अंदर सबसे पहले हम यूज सिलेक्टर पर ऊपर करेंगे कि यूज सिलेक्टर की हेल्प से ही हम कार्ड के आइटम जो वैल्यू है उसको यूजर को हमने इंपोर्ट किया यूजर, और यूज सिलेक्टर का हमने यहाँ एक वेरी कॉस्ट कार्ड नाम का
just need to use selector state में स्टेट डॉट। अब जो स्टोर में जो हमने वेरिएबल बनाया है लेफ्ट साइड में ये पार्ट, इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी जब हमारी जो वैल्यू है कहाँ पर स्लाइड में कार्ट टू, इसको लिखना पड़ेगा। तो कार्ट टू, इससे हम मतलब अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें पास परसेंट दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक नंबर भी शो कराना है। आई विल सिंपली क्लिक कार्ट डॉट लेंथ कार्ट वैल्यू। zero item right now. When we click add, it will show 1, 2. Now we have made add to cart button. Now we have to make more changes. The cart is showing right now, but we have to show all the cart items here. So now we will go to our cart page. So first of all, we have to import both the packages. One is import selector, also use dispatch. So first we have to access uh, cart value here. So I have used use selector state is equal to state dot cart to value. So here is cart. Now we will map it here. So const anf cart dot map, and all the code remains same as we have route. By using this we can see on the top of the page import. Now three items in our cart, so we not in proper way, so we have to make it in proper way. So simple write container the React desktop container. After that you can see not working because we don't want to have the part here. So a delete button here. So not made any but function there. So we have to make it like that, like to, and so we will write here dispatch and make an instance of use dispatch. Not dispatch is dispatch. Now we have to make in our slice from here, and so function we will remove cart from our cart items. So what we need the cart, we will use filter
So state dot card to state action. So we will write like here return if item dot id is not equal to return those item which is not equal to item. After that, our cart is refreshed to latest value. There is a mistake in our cart page. We have sent full cart item. We have to cart value is increasing. Now when we click remove from cart, it will remove. Now we have to make there is only one method if you want to put more value here. So now sending our item. Here is the so we have more things here. So we send two things here. Is I will pass item here. Item quantity Q U P I T Y come to cart page. We have to display quantity also. So our quantity is coming here. Now once for will call fetch increase and active code. It in per line. So it will use the full data.
So of connection right again. So plus state actions state dot hard2 dot map id from here. What decrement? So I'm sorry, we have not exported the our cart is introduced not here. Page when we click plus the value will be the div and right state
a use That's all for today. We will continue.